हेलो क्लास, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सबको? मेरी वॉइस ऑडिबल है? ठीक है, स्टूडेंट्स और कम हो गए, 4 हो गए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ट्राई किए कल जो हमने टॉपिक किए थे। उसमें क्वेश्चन ट्राई किए आप सबने? हमाद, युवराज, मानस, खसफल, यश, टॉपिक स्ट्राइक किए थे। सर वो एक्सरसाइज ट्राई की थी। एक्सरसाइज हो गई, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ आयुष, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, ट्राई कर लिए थे। यस सर, है। ठीक ठीक, पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डाउट है सर? डाउट है, बताइए। खसफल, विच क्वेश्चन? सर ये एनसीईआरटी 3.3 क्वेश्चन 12। CRT 3.3 क्वेश्चन नंबर 12। Just a second. Okay, please देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.3। 12 is sin square 6x minus sin square 4x is equal to, you have to prove this is equal to sin 2x sin 10x. Now this is a square minus b square, so this can be written as sin 6x minus sin 4x. Take LHS. And this is sin 6x plus sin 4x. This is equal to sin a minus sin b, so your formula is 2 sin a minus b by 2 and cos a plus b by 2. Next is 2 sin a plus b by 2 and cos 6x minus 4x by 2. You can now get 2 sin x cos 5x plus 2 sin 5x cos x. Okay, now this can be written as 2 sin x cos x, and this can be written as 2 sin x cos 5x. So this is what sin 2x, and this is what sin. किसका डाउट है? मेरा था सर। यश, कोई डाउट इसमें? नो सर, ओके। ठीक है, एनी अदर डाउट? No, sir. We will start next. ठीक है, हाँ इसको प्लीज नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में। रब करते हैं इसको। रब कर दें। सर सो नेक्स्ट हमने कल जो लास्ट टॉपिक किया था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू सम और डिफरेंस फॉर्म। उसमें किसी को डाउट आई थिंक नहीं होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लीज प्रूव दिस, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13.
सर इसमें प्रूफ क्या करना है? This is equal to 0. Let's try this. Done, sir. Done. कौन मानस? Yes, sir. Okay. Kaspar हुआ? Done. Hamad, Harshit, Bisht, Yuvraj, Yash, Uzair. Uzair, this is your first class. Uzair, is this your first class? Okay, you are from which school? Uzair, from which school you are? ओके उज़ैर, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और आपकी काफ़ी क्लासेस मिस हुई हैं, ठीक है? सो आज बस आप ट्राई कीजिए, मे बी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है? फिर निष्कर्ष सर से बात करके आपकी बैकअप कैसे अरेंज होती है वो हम देखते हैं, ठीक है? आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, आप अभी एक दो क्लासेस में ट्राई कीजिए जितना भी आपको समझ में आए। युवराज, हर्षित, बेस्ट, यश, अमाद, हुआ ये सॉल्व? नहीं हो रहा सर। हो गया सर। युवराज हो गया? हाँ, ग्रेट। प्लीज आइए। तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, ठीक है अमाद, हम इसको टच नहीं कर सकते है ना, यहाँ तो कोई एडवांटेज नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं हम, कॉस ए कॉस बी। तो फिर यश कैसे करेंगे इसको? यश कैसे ब्रेक हो सकता है ये? यश, cos a plus b cos a minus b, याद आया? यस सर। है ना? तो कैसे ब्रेक हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज, आप बताइए मुझे नेक्स्ट स्टेप। cos pi by 13 pi by 13 then plus 9 pi by 13 plus cos then pi by 13 minus 9 pi by 13 pi by 13 minus 9 pi by 13 plus this is cos 3 pi by 13 plus this is cos 5 pi by 13. Okay, now ये कितना हो जाएगा? This is cos 10 pi by 13 and plus ये हो जाएगा cos minus 8 pi by 13
प्लस ये कितना हो जाएगा cos 3 पाई बाय 13 प्लस ये क्या हो जाएगा cos 5 पाई बाय 13। ओके हमारा ठीक है हमारा। सो ये हो गया cos 10 पाई बाय 13 and this is cos minus theta is again cos theta cos cos theta 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 13। ओके यश अब यहाँ कुछ रिलेशन हमें दिख रहा है, देखिए 13 10 and 3 है कुछ रिलेशन 10 13 3 ये है ना, सर। ये 10 plus 3 13 होता है। हाँ सर। सिमिलरली ये एक रिलेशन हमें दिख रहा है 8 13 and 5। ठीक है, अब हाउ कैन वी चेंज दिस 10 पाई बाय 13 इनटू cos 3 पाई बाय 13, कैसे चेंज कर सकते हैं? यश कैसे चेंज हो सकता है? सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग। सो हम ये अगर लिखते हैं cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लिए, देखिए कितना आता है ये सो व्हाट? हम्म? हाँ सर। यश कितना हो जाएगा 13 माइनस अगेन 10 हो जाएगा ना, हाँ सर। 13 minus 3 10 10 pi by 13, it's mean in place of 10 pi by 13 we can write this, यस सर। है ना। एडवांटेज क्या होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप और कंटिन्यू करेंगे बट यहाँ देखते हैं एडवांटेज क्या होगा। व्हाट इज cos pi minus theta? माइनस थीटा sin थीटा। cos theta है ना, pi है, so in pi no change, cos remain cos 3 pi by 13। now check the quadrant, in which quadrant this lie? फर्स्ट। हाँ यश क्लास मिस तो नहीं हुई ना, ये मिस हुई है मेरी कुछ? सर हुई है स्टार्टिंग की। अच्छा स्टार्टिंग हुई है। यश दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस थर्ड and this one is 4। ठीक है, तो 0 90 180 270 and 360। ठीक है, pi means 180, so 180 minus theta means second quadrant, pi means 180, so 180 में से small angle आप subtract कर रहे हैं, you will get the angle in the second quadrant। ये क्लियर हुआ इतना? हाँ क्योंकि सर। 3 pi by 13 तो बहुत small angle आ जाएगा। so this line the second quadrant, second quadrant में cos क्या होता है? cos is positive। cos is negative। ठीक है, remember like this, first is write this all school to college, आप सब स्कूल में, from this school you will move to college, so all school to college। S means sin, sin and its reciprocal cosec, ये पॉजिटिव रहता है, या tan और cot पॉजिटिव रहेगा, या cos और उसका reciprocal sec पॉजिटिव रहेगा, remaining are negative। so in the second quadrant sin and cosec is positive, other is negative, so cos is negative in the second quadrant, so put a negative sign। okay, then similarly 8 pi 13 and 5 pi by 13 there is a relation, बता सकते हैं? पाई माइनस pi minus एलसीएम लीजिए, देखिए 8 आ रहे हैं, एलसीएम 8 आ रहा है यश। यस सर। सो दिस इज अगेन कितना हो जाएगा, ये भी डायरेक्टली लिखते हैं माइनस cos 5 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। now these are same, तो ये कैंसिल हो जाएगा, this will cancel, so final answer is 0।
Okay, Yash, any doubt in this? No sir. Okay. Yash, रब कर दें इसको? Wait sir. थोड़ा सा. Done sir. Done. And try next question. Next is prove that cos x plus cos y whole square plus sin x plus sin y whole square is equal to 4 cos square x plus y by 2. Prove this question. Let's try this. Proved, sir. Proof? Okay, guys. Yes. हो गया सर. Yeah. Okay. Yes. ठीक है. कोई ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ अभी? Any student who has not completed? Me sir. Sir, wait. Okay. Done, sir. Done? ठीक है. कोई स्टूडेंट है जिनका अभी रह गए? नहीं हुआ सर. नहीं. किसका नहीं हुआ? यश नहीं हुआ? Yes yes sir. Okay. कोई इशू नहीं है यश. This is cos x plus cos y. Yash, what's the formula of cos x plus cos y? Sir, 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. This is 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2.
and its square plus similarly what's the formula of sin x plus sin y? 2 sin x plus y by 2 cos x plus x minus y by 2. Cos x minus y whole square. Okay. Now this can be done as 4 cos square x plus y by 2 and cos square x minus y by 2 plus this is 4 sin square x plus y by 2 and this is cos square x minus y by 2. So the denominators will not be squared. Okay. Please remember this thing. If this is sine 30 whole square, okay, this angle, then what's the answer? Sin square 30. Sine square 30. 30. है ना? तो angle square नहीं होते. We can't say that this will be sine square and 900. ऐसा नहीं कहते हैं. Yes, sir. है ना? So always remember जब भी square हो रहा है trigonometric ratio पे, this angle will remain the same. Angle में कोई change नहीं होगा. ठीक है? और ये मैंने कल भी कहा था that this 2 and this 4 will not be cancelled. यश clear हुआ था? Yes, sir. कोई इशू नहीं है. अभी आप जस्ट 10 से आए तो छोटे मोटे डाउट्स आपके रहेंगे 2-3 months. जिसको प्रॉब्लम है प्लीज बताते रहिए. नाउ यश कुछ कॉमन आ रहा है? Yes, sir. 4 cos square x minus y by 2. Yes. तो ये क्या आ जाएगा फिर? ये हो जाएगा आपके पास फिर cos square x plus y by 2 plus cos square x minus y by 2. Just a second. Just Sin. Thank you. sin square x plus y by 2. So we know that sin square theta plus cos square theta is 1. So yes, this will be 1. So final answer we get is 2 cos square x minus y by 2. पेपर ऊपर तो प्लस लिखा था. Sorry. मैं वो माइनस हुए ना. तो ऊपर क्वेश्चन में एक मिनट में एक बार चेक कर लूं. 4 cos square x plus y by 2. Minus x. हाँ ये सॉरी नेगेटिव आएगा. This will be negative. Okay, this is answer. So any doubt in this? No, sir. To try next. This question is show that under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 8 theta is equal to 2 cos theta. Let's try this question. तो वो 2 cos 8 थीटा है ना पहले. This is 2 cos 8 theta. Let's try this. Done, sir. Proved. Done? सर ये कैसे करेंगे? मुझे ट्राई कीजिए. कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी 1 plus cos 2 theta. Please try that question. Try that property. फिर देखते हैं.
ठीक है, we have one property 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. Please try that property. Krusfeld का हुआ है, और भी किसी का हुआ है सॉल्व? मानस सॉल्व हुआ क्वेश्चन? मानस सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? Try this 1 plus cos 2 theta. Okay, minus done. ठीक है, और किसी ने सॉल्व किया है? प्लीज ट्राई कीजिए। सर 1 मिनट शायद हो जाए। अच्छा, हाँ कीजिए, वी हैव द टाइम। डन सर। ओके, किसी का रह गया क्वेश्चन? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? कौन? यश? सर हर्षित। हर्षित, प्लीज अगेन। ठीक है मैम, वी हैव दिस 2 प्लस सर हो गया। हो गया, ठीक है, ठीक है युवराज। मानस यहाँ से कुछ कॉमन आ सकते हैं? सर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus cos 8 theta. Now we have this formula 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. तो यहाँ क्या होता है? एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ जो भी एंगल है, दिस एंगल विल बिकम हाफ ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस इज 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर 2 cos 4 theta, 2 cos square 4 theta। 2 cos square 4 theta. Now this is equal to under root this 2 plus under root this is 2 plus, ठीक है। Now this is under root of 2 into 2 cos square 4 theta, तो ये क्या हो जाएगा? यस सर 4 cos square 4 theta। हाँ वो तो ठीक है, बट उसका अंडर रूट है ना, उसका अंडर रूट फाइंड कीजिए, कितना आएगा? 2 cos 4 theta। 2 cos, ठीक है। Now in this one take 2 common, यस। this is 2 plus under root this is 2, this is 1 plus cos 4 theta equal to under root this is 2 plus under root this 2 into, now 1 plus cos 4 theta क्या हो जाएगा? 2 sin sorry 2 Cos cos 2 theta, square 2 theta। यस। ये क्या हो जाएगा? under root of this 2 plus again under root, so 2 into cos 2 theta, again we will take common 2, तो ये हो जाएगा 1 plus cos 2 theta and this is equal to, यहाँ कर देते हैं 2 into this is 2 cos square theta,
कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। इस नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी सर अगर हमें ऐसा ही कोई एक और क्वेश्चन बनाना हो तो उसमें हमें क्या चीजें ऐसे कांस्टेंट लेनी चाहिए कि वो क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुल हो? अच्छा, अगर इसमें हमें कोई क्वेश्चन फॉर्म करना हो, ये सर इस तरीके से। अच्छा, जैसे ये 8 है आपका, है ना, तो फाइनली आपका थीटा आ रहा है, सो इट्स मीन वी आर डिवाइडिंग दिस विद 8। तो अगर ये आप 16 कर देंगे, 16 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। ये तो सर 2 का स्क्वायर हो गया ना, जी जितने हम अंडर रूट डालेंगे उतना हम स्क्वायर डाल देंगे 2 का। 3 अंडर रूट्स थे तो 2 raised to power 3 जो 8 हमने डाला वहां पे 8 थीटा। हाँ, ऐसे अगर 4 अंडर रूट हो तो वो 16 थीटा हो जाएगा। अगर थीटा ही चाहिए तो फिर एक और अंडर रूट आ जाएगा। एंड सर अगर सपोज मैं यहाँ पे 3 प्लस लिख दूं और वहां पे मैं दे दूं कि 3 + 3 cos 8 थीटा, हाँ, हम अगर अगर सर हम ये सारे 2s को 3 से रिप्लेस कर दें, यहाँ 3 कर दें, हाँ हर जगह, ओके, फिर तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा। देखिए यहीं पे ये है 3 + 3 cos 8 थीटा, प्रॉब्लम यही आ जाएगी कि आपने ऐसे 3 कॉमन लिया, यू गेट 1 + cos 8 थीटा एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो युवराज उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा। सर मैं ये कह रहा था जैसे अंडर रूट हमने 3 + √3 + √3 + 3 cos 8 थीटा। हाँ नहीं, वो ठीक है, आपने जैसे यहाँ 3 किया ना, तो इसका जो आंसर होगा वो आ रहा है हमारा √6 इंटू cos स्क्वायर 4 थीटा। यस सर। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, 3 एंड √6 वहाँ कॉमन नहीं आएगा रूट्स, ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप फिर नहीं आएगा, ठीक है। यस, थैंक यू सर। Okay, try this question. Prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3 by, please try this. Ahmad, please try कीजिए, बहुत सिंपल है, स्क्वायर है, चेक कीजिए व्हाट कैन यू डू इन दिस, कीजिए फिर।
डन मानस, ठीक है। अहमद, हर्षित, बिश, युवराज, यश, खसफल। खसफल हुआ ये क्वेश्चन? कर रहा है सर। अहमद, युवराज, यश। यश हो रहा है क्वेश्चन? सर आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। 3/2 है, माइनस नहीं है, दिस इज 3/2। देखिए, this is cos square x plus, now this can be written as cos x plus pi by 3 whole square plus cos x minus pi by 3 whole square. Okay, this is cos square x plus, now what is this? Cos a plus b, so cos a cos b minus sin a sin b plus cos a cos b plus sin a sin b. This is cos square x plus cos x into, now this is what? Cos 60. So cos 60 कितना होता है? 1/2 minus sin x into, this is what? Root 3/2 whole square plus, this is what? Cos pi by 3 again 60. This is cos x by 2. ये कितना हो जाएगा? Plus root 3/2 sin x whole square. So इसको open कर दीजिए. This cos square x is a square. So 1/4 cos square x plus b square. So 3/4 sin square x minus 2ab. So minus 2 into 1/2 into root 3/2 sin x into cos x plus cos square x by 2. ठीक है, sorry, this cos square 1/2 plus 3/4 sin square x and plus 2ab. So 2 into a, this 2 into a into b sin x and cos x.
So this part cancel, this part cancel. इसको flip कर देते हैं. तो ये हो जाएगा फिर cos स्क्वायर x प्लस ये क्या था प्लस x. तो ये आ गया फिर आपके पास प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस ये cos स्क्वायर x तीनों को ऐड कर दीजिए. कितना हो जाएगा 5 6 cos स्क्वायर x बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर टर्म्स को ऐड कर दीजिए. कितना हो जाएगा 6 बाय 4 sin square x. So take common 6 by 4 and you will get cos square x plus sin square x, and this is what is equal to 6 by 4. So answer is 3 by 4. Clear हुआ यश? यश clear हुआ ये? Yes, sir. Okay. Please note कीजिए, then we will start the next question. यश रब कर दें इसको. यश रब कर दें. Yes, sir. Then try next. Next question is find the values of cos pi by 8. Please find the value of this cos pi. Cos pi by 8 कितना होता है? Cos pi by 8 is what? Harshit, Yuvraj, Manas, Kaspal, Yash. What is pi by 8? Pi by 8 कितना होता है in degree? Sir. 5/4 divided by 2. है ना, pi by 4 divided by 2. So it's been 45 by 2. So हमें 45 की वैल्यू तो पता है, but we don't know the value of. अच्छा मानस का हो गया. मानस आंसर क्या है? √2 plus 1 by 2 √2. ठीक है मानस, अभी चेक करते हैं. So we know the value of pi by 4. Now we have to find the value of pi by 8. तो pi by 8 क्या होगा? It is the half of pi by 4. So हमारे पास हम्माद, हर्षित, युवराज, यश कौन सा ऐसा फॉर्मूला है which give you the angle in half? जो फाइनल जो आंसर देता है वो हाफ दे देता है एंगल का, किसी भी एंगल का. मैंने आपको बताया था these are very two important formulas. 1 plus cos 2 theta. युवराज क्या होता है ये? Sir, so that formula with x plus y by 2. नहीं cos नहीं, square x. 1 plus cos 2 theta. मैंने कहा था ये two formulas as it is please learn कीजिएगा. So cos square x. नहीं नहीं, Sir, 2 cos square theta. 2 cos square theta. ठीक है युवराज? Yes, sir. याद है कल भी क्वेश्चंस किए थे हमने इसके बेस. So please Yes, sir. learn these two formulas, 1 plus cos 2 theta and 1 minus cos 2 theta. देखिए अब इस फॉर्मूले का एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ जो भी एंगल है ये आपको उसका हाफ देता है. So if we know the value of pi by 4, then we can find the value of pi by 8 from this one. ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे whenever we have to find the value of half of the angle. So हम क्या कह सकते हैं that 1 plus cos pi by 4
इज इक्वल टू, क्या युवराज हम ये कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8? Yes, sir. Yeah? We have to find the value of cos square pi by 8. So we can say cos square pi by 8. This is equal to 1 plus cos pi by 4 by 2. So we can say that cos pi by 8 is equal to, अब हम रूट फाइंड करें तो प्लस माइनस दोनों साइन आने चाहिए, अंडर रूट ऑफ 1 plus cos pi by 4 by 2. Now we have to find the value of this pi by 8. So this pi by 8 will lie in which quadrant? Pi by 8 Sir, pi by First. 8 would be in First. first quadrant. in the first quadrant. So in first quadrant, cos pi by 8 is what? So positive. Positive. So we will write that pi by 8 will lie in first quadrant. Lie in first quadrant. So हम पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है. सो cos pi by 8 is equal to under root of 1 plus cos pi by 4 by 2. Now this is equal to under root of 1 plus, what is pi by 4? This is 1 by root 2 by 2. So this is equal to under root of root 2 plus 1 by 1 2 root 2. 2. Any doubt in this question? No, sir. Done. Okay, please note down this question, and we will start a question which is very similar to this one. Then try this question second. Just try this. Sine pi by. Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. तो इसमें cos square pi by 8 is equal to 1 plus cos pi by 4 by 2. But अच्छा हमने उसका अंडर रूट ले लिया. Yes, sir. ठीक. And a whole under root 2 minus 1 divided by 2 root 2. Okay, so your answer is this one. Under root 2 minus 1 by 2 root 2. This is the answer. Kaspal, this is the answer. Root 2 minus 1. This answer is correct. Final answer is this. Under root 2 minus 1 by 2. This. Manas, who are your question? Second one. Minus a whole root 2 of root 2 minus. Minus यही आंसर है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. Yeah, हुआ sir. Done. Okay. ठीक है मानस, कोई इशू नहीं. हर्षित लेट ज्वाइन किया आज.
हर्षित लेट ज्वाइन किया है आज? हर्षित मेरी वॉइस ऑडिबल है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज लेट आप आए हो? Yes, sir. Actually, net. ओके, नेट इशू है दोनों का, हर्षित बेस्ट एंड हर्षित। सर वो ऐप अपडेट करना था तो उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा, मेरे को पता नहीं था उसको अपडेट करना है। मैथ तो समय तो अभी आया नेट। अच्छा। Okay. तो कुछ पार्ट मिस हुआ होगा, तो उसके आप फिर वीडियो लेक्चर्स के लिंक ले लीजिएगा। न्यू स्टार्ट नहीं किया, बस जो भी हमारे कल के फॉर्मूले थे उसी के बेस पे हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। युवराज, यश, ये हो जाए तो प्लीज बता दिएगा। हर्षित प्लीज यहाँ देखिए, वी हैव स्टार्टेड sir. this question. Okay. So we have to find the value of cos pi by 8 and sin pi by 8. ये हमने कर लिया था complete. Now we are doing this second part. So pi by 8 is what? Harshit and Harshit Bish. What is pi by 8? Pi by 8 is 45 by 2, है ना? So we know the value of 45 degree. Now we have to find the value of 45 by 2 degree. So in such cases where we know the angle of twice of this angle, तो हम वहाँ क्या करते हैं? We have a very important formula which will convert the twice of angle into half. We have two formulas. ये मैंने कल कहा था कि प्लीज इसको सेपरेटली नोट कीजिएगा, क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। So this formula यहाँ twice था, ये क्या हो गया? Only theta. Similarly this is twice and this become theta. ठीक है हर्षित? हर्षित ये क्लियर है? बच्चे हाँ, चैट बॉक्स प्लीज आप यूज कर सकते हैं ना, फिर मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं। हर्षित एंड हर्षित बेस्ट, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नेटवर्क देन प्लीज यूज द चैट बॉक्स। ये से आते समझ में आ गया। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin pi by 8, so we will use this formula. Okay. Now if we write 1 minus cos pi by 8, then we will say this is equal to, sorry, if we write 1 minus cos pi by 4, then this will be equal to 2 sin square pi by 8. Now this can be written as 2 sin square pi by 8 is equal to 1 minus cos pi by 4, or 1 minus cos pi by 4. Now this sin square pi by 8, this is equal to, we can write 1 minus cos pi by 4 pi 2, and we can write sin pi by 8 is equal to plus minus under root of 1 minus cos pi by 4 by 2. Now this pi by 8 will lie in which quadrant, Harshit and Harshit Bish? So first, In the first quadrant. So we will write this pi by 8 will lie pi by 8 lies in first quadrant. This lie in the first quadrant. So sin pi by 8 is equal to, so we have both the sign, positive and negative, but because this angle lie in the first quadrant, so we will use the positive sign. Suppose if this angle will lie in the third quadrant, then we will use a negative sign. So we are using the positive sign by 2. So we get this sin pi by 8. This is equal to under root of 1 minus cos pi by 4 is what? 1 by root 2 by 2. So we get sin pi by 8 is equal to
under root of this is root 2 minus 1 by 2 root. So this is the answer. Is this clear, Harshit? Sir, Okay, if this is clear, then find the value of this third and y by 8. Please find this one. whole under root 2 minus 1 divided by under root 2 plus 1. What's the answer? Whole under root Under root. root 2 minus 1 divided by root 2 plus. बिल्कुल ठीक है. Which is को rationalize भी कर दिए कसफल. Please rationalize this and then tell me the final answer. Root 3 minus 2 root 2. I think answer is this root 2 minus 1. Minus 3 का answer. Excuse me, sir. Yes, Yuvraj. सर ये तो दोनों जो पिछले आंसर्स आए थे उन्हें रिलेट करके भी आ सकता. हाँ, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. We have to find tan pi by 8. Then we will write this as sin pi by 8 by cos pi by 8. वो तो सर डिवाइड करा तो यही आंसर आ गया. हाँ, है ना? वो सही होगा तरीका. सही है, बट एग्जाम में वो तीनों नहीं पूछेगा. हाँ जी. एग्जाम में वो 10 pi by 8 पूछेगा, है ना? सो डिफरेंट मेथड्स हैं. बताए तो मैं, ठीक है, क्या क्या हमारे पास मेथड अवेलेबल है. तो वैसे तो ये सीधा भी आ गया. हाँ, सीधा इसलिए आ गया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके थे. यस. ठीक है, हर्षित विष्ट एंड हर्षित नोट किया ये. यस सर. ठीक है, इसको कर देते हैं. कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में तो आ गया? यस सर. है ना, उससे पहले हम क्वेश्चंस ही कर रहे थे उसके बेस पे, तो कुछ ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, वो आप देख लेना. सर, जी कसपर. आप उसे रेशनलाइज कर देंगे सर? हाँ, मैं भी करता हूँ रेशनलाइज. ठीक है, पहले कस्पल के लिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, फिर बाद में हम सॉल्व करते हैं. ठीक. कस्पल, आपका आंसर ये आया था रूट 2 माइनस 1. नहीं, मेरा आंसर ये रहता है अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2. नहीं, स्टार्टिंग में आंसर ये था ना आपका. हाँ जी, स्टार्टिंग में है ना. इसको रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. ऐसे किया था कस्पल? यस सर, किया था. ओके. नाउ दिस टर्म इज सेम. इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. एंड दिस इज a plus b a minus b. देन व्हाट इज दिस? a square minus b square. हाँ, a square minus b square. ठीक है. नाउ दिस इज रूट, तो रूट सेपरेट हो जाएगा, है ना. ये हाँ एक जी, स्टेप, एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ. मैंने वो कट नहीं करके पूरे अंदर में स्क्वायर को खोल दिया. अच्छा. रूट 2 माइनस 1 ये हो जाएगा वो. सो दिस इज आंसर. और सब प्लीज देखिए, फर्स्ट मेथड ये कि हमारे पास sin pi by 8 की भी वैल्यू है. वी हैव. ओके. एक्सक्यूज मी सर. यस युवराज. सर जैसे अब जो दूसरा मेथड हम यूज करेंगे उसमें 1 माइनस 1 बाई रूट 2 और डिनोमिनेटर पे 1 प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा. तो सर इसमें अगर डिविडेंडो वाला जो होता है फॉर्मूला वो लग सकता है? वो कब लगता है? वो जब LHS RHS दोनों होते हैं आपके पास. ये था ना, ये कुछ न्यू नहीं है, ये पहले 9th क्लास में था. ठीक है. वो आई डोंट नो कैसे बच्चों को मिस हो गया. ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है. ये अगर ऐसा होता है देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं कि यू कैन अप्लाई दिस c plus d by c minus d. यानी LHS RHS होने चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, देन दिस इज ट्रू.
ठीक है, बहुत तो सिंपली उसको चेंज कर सकते हैं, जी। तो उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हाँ, प्रॉपर। इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अगर कुछ एडवांटेज होता है तो। ओके सर, गॉट ठीक है, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक +1 इधर कर दीजिए, +1 इधर कर दीजिए, ओ ओके सर, गॉट इट। एक -1 यहाँ कर दीजिए, एक -1 यहाँ कर दीजिए, ये आ जाएगा कंपोनेंट इंटीग्रल। ठीक, थैंक यू सर। ओके। Okay, we have two methods. We can write tan pi by 8 is equal to sin pi by 8 and by cos pi by 8. This is our first method. तो हमें करना क्या होगा, sin pi by 8 हम सेपरेटली फाइंड कर लेंगे, cos pi by 8 हम सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आई थिंक ये वैल्यू आई थी √2 + 1 by 2√2। ये आप फाइंड करेंगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है then you have to find this. This is √2 - 1 by 2√2। ठीक है, जैसे हमने साइन हर्षित, जैसे हमने साइन फाइंड किया था, सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉस। जब ये दोनों आ गए देन अप्लाई इन दिस, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस √2 - 1 by √2 + 1। रिमेनिंग स्टेप हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। दिस के लिए Yes. सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, we have this relation, second is 1 + tan square theta is equal to sec square theta, है ना। sec कैसे आ सकता है, जब cos आ जाए, इट्स मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 8, उससे sec pi by 8 फाइंड कीजिए, वहां से tan फाइंड कर लीजिए। दिस इज योर सेकंड मेथड। The choice is yours, you can break this, change this tan into sin into cos, then find separately, or you can use this formula। ठीक है, ट्रिगो है तो काफी मेथड्स होते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, किसी को डाउट तो नहीं है? No, नो sir. सर। No, sir. Shall we start next question? Yes, But sir. Yes, sir. always remember वो negative and positive sign, ठीक है, that depends on the quadrant। तो जो भी quadrant हो उसके according please सर find। क्लास 9:30 तक है। हाँ, 9:30 तक करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ है। So if tan x is equal to 3/4 and x is greater than pi and this is less than 3 pi by 2, find the values of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Please try this.
Sir, sin x by 2 under whole minus whole under root 5 plus 2 divided by 2 root 2. Sin x by 2 ये नहीं है आंसर. नहीं 3 by root 10. And cos x is minus 1 by root 10. And tan x by 2 is minus 3. Please try this. Minus answer 3 by root 10, minus 1 by root 10, and minus 3. Great. This is the answer. ठीक है minus. सर ये कैसे करेंगे? देखिए आपको अगर x by 2 चाहिए then you know that कि हम cos का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो हमें tan के बिना tan से हम cos फाइंड कर लेते हैं. ठीक. So we have this relation 1 plus tan square x is equal to sec square x, क्योंकि हमें cos चाहिए. So 1 plus this is what 3 by 4 whole square is equal to sec square x. कितना हो जाएगा ये 1 plus 9 by 16 is equal to sec square x. So we get this sec square x is equal to what? 25 by 16. So we get sec x what? Plus minus 5 by 4. 4. Now x lie in which quadrant? X lies Sorry. X lies in which quadrant? The x lies in second quadrant. In second quadrant or third quadrant? Oh, sorry, third quadrant. Third quadrant. So x lies in third quadrant. First of all, answer आया ये? आया सर आया. Okay. So sir, everything will be negative. Sec is negative. Sec is negative. Sec is negative. So we get sec is equal to minus 5 by 4. Okay. So when sec is this, then what is cos? Cos is minus 4 by 5. ठीक है? Yes. Now we get cos. Now find cos x.
ठीक है, ये क्लियर हो गया. x lie in the third quadrant, then x by 2 lie in the second quadrant. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं that x is greater than pi less than 3 pi by 2. So divide this complete in equation with 2. So we will get pi by 2 less than x by 2 less than 3 pi by 2. ठीक है, so this means 90 and this is 135. So between 90 and 35 means second quadrant. ये clear हुआ सबको? X lies in the third quadrant. आप उसको divide करो, so x by 2 lies in the second quadrant. That's why we get cos x is equal to minus 1 by root tan. We will select the negative sign. Now similarly find the sine and similarly find the tan. चलिए इसे शुरू कर दीजिए. And we will start the next topic. Any doubt in this type? Clear हुआ ना सबको? ठीक है, कैसे? युवराज, यश, हो गया ये complete? Yes, sir. Okay, shall we start next? Yes, sir. So our next topic is trigonometric equation. हमने अभी किया था trigonometric functions, है ना, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. Now next is trigonometric equation. Trigonometric equations. Now what is trigonometric equation? The equation equation involving Equations involving trigonometric functions of unknown angle is called trigonometric equation. ठीक है? So what is a trigonometric equation? It is an equation involving trigonometric functions of unknown angle. For example, sin theta minus 1 by 2 is equal to 0. अब देखिए, this is a trigonometric equation. तो trigonometric equation क्या होती है? जहाँ हमारे trigonometric function होते हैं of unknown angle. ठीक है, trigonometric functions होंगे हमारे of unknown angle, then that equation is called the trigonometric equation. आपने algebraic equation की थी. Similarly, we have trigonometric equation जहाँ पे trigonometric functions involved होते हैं. कुछ न्यू नहीं है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो बस याद रखना इक्वेशन हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. किसी को इसमें डाउट तो नहीं होगा? नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, ओके, फर्स्ट टेल मी दिस. Is this a algebraic equation? yes, Then what's the solution of this equation? x is equal to 2. X is equal to 2. Now how can you define the solution? Solution क्या होता है? Value of x satisfying the equation. The value of x which satisfy the equation, है ना? तो similarly trigonometric equation में solution क्या हो जाएगा? Value of The angle satisfying. The value of unknown angle. The value of unknown angle which satisfy the trigonometric equation is called solution of
trigonometric solution of trigonometric equation. ठीक है? For example, sin theta minus 1 by 2. Value of theta which satisfy this equation. So what can be the value of theta? 30. 30 है ना, pi by 6. और भी solutions हैं वो हम अभी पढ़ेंगे. But हमें ये समझ में आ गया that what is the equation and what is the solution. So anyone have doubt in these two topics, trigonometric equation and solution? Any doubt in this? No, sir. No. So please note this and we'll start the next topic. Done? Excuse me, sir. हाँ जी. तो इसमें और भी तो वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे जो पाई बाई 6 है, फिर पाई प्लस पाई बाई 6. हाँ बिल्कुल बिल्कुल युवराज, और भी वैल्यूज हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है. Yes. So अब जिससे युवराज ने कहा कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होती हैं, है ना. इन केस ऑफ साइन एंड कॉस, इन केस ऑफ साइन एंड कॉस आफ्टर 2 पाई वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड इन केस ऑफ tan आफ्टर पाई वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. So on that basis we will define our solution as principal solution. Principal solution. ठीक है. Please write the definition. The solutions for which the solutions of a trigonometric equation for which x is greater than equal to 0 and less than 2 pi is called principal solutions. ठीक है. अब देखिए सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि आफ्टर 2 पाई साइन रिपीट होगा, tan रिपीट होगा, तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है हमारे पास, है ना. हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे. हमारे पास जैसे लास्ट क्वेश्चन था sin थीटा इज -1/2 is equal to 0, so it means sin theta is equal to 1/2. Sin theta is positive. Now positive sin is positive in the first quadrant and second quadrant. फर्स्ट सेकंड में हमें 2 एंगल्स मिल गए, उसके बाद 2 पाई जैसे ही हमने जंप किया फिर 2 एंगल्स आ गए, तो ऐसे इनफाइनाइट हमारे पास आंसर्स आ गए. तो इसीलिए हम सॉल्यूशंस को डिवाइड कर रहे हैं इनटू प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होगा उसमें हम एंगल फाइंड करेंगे बिटवीन 0 to 2 पाई. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम सिर्फ सॉल्यूशन अपना फाइंड करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई. जनरल सॉल्यूशन में हमारे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हम उसको फाइंड कर देंगे. जनरल सॉल्यूशन में जितने भी हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं वो हम फाइंड करेंगे. प्रिंसिपल में सिर्फ हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे द एंगल व्हिच लाई बिटवीन फ्रॉम 0 to 2 पाई. किसी को इसमें डाउट है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं इससे. बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना. Okay, sir. क्योंकि 10 तक तो सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते थे. नाउ इन 11 यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स. ठीक. तो हमें पता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस है इनफाइनाइट भी आएंगे, 2 बाय ऐड करते रहिए आपके पास सॉल्यूशंस आते रहेंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड आवर सॉल्यूशन इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो प्रिंसिपल में हमें क्या करना है कि हमारा जो एंगल है दैट शुड लाई फ्रॉम 0 to 2 पाई. सो प्लीज रिमेंबर दिस. आप जो आंसर फाइंड करेंगे दैट शुड लाई 0 to 2 पाई. ठीक है. तो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. हमारे पास है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. सो क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है. सो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड. युवराज ये क्लियर है? यस सर. यश, अर्षित, Yes, sir. है ना?
हर्षित ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो आपका क्वेश्चन मिस हुआ है उससे रिलेटेड नहीं है. सो दिस इज अ फ्रेश टॉपिक फॉर एवरीवन, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें. ओके, so sin theta is equal to pi by 2. Now remember one thing, this is pi, this is 0 and this is 2 pi. Whenever we have to find an angle in any quadrant, then we will use pi and 2 pi. Whenever we have to find any angle in any quadrant, then we will use pi and 2 pi. कैसे करेंगे? Now in the first quadrant हमें चाहिए तो sin theta कितना हो जाएगा? Sin theta is equal to, in place of 1 by 2 हम क्या लिख सकते हैं? Sin pi by 6. So we get theta is equal to pi by 6. So first quadrant तो हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो किसी को डाउट नहीं है, है ना? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे कर सकते हैं? हमें एंगल चाहिए इन सेकंड क्वाड्रेंट. सो व्हाट विल यू विल डू इन ऑल द क्वेश्चंस, ऑलवेज फर्स्ट फाइंड द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन शिफ्ट दैट एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऐसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आप लिख देंगे sin pi माइनस pi by 6. अब देखते हैं हम sin pi minus sin pi minus pi by 6 क्या होता है? This is pi, so no change. We will again get the sin pi by 6, and this line the second quadrant. So in second quadrant, sin is what? Positive. So we will again get 1 by 2. ये method clear हुआ? हर्षित, बेश, युवराज, यश. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया ना? हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. हम देख रहे थे कि क्या इसकी वैल्यू वही आ रही है, इसकी भी वैल्यू वही आ रही है. सो दिस इज sin theta is equal to, what is this sin? 5 pi by 6. So we get what? Theta is equal to 5 pi by 6. क्लियर हुआ ये? यस सर. किसको डाउट है अभी इसमें? हर्षित, क्लियर हुआ ये? यस सर, अब हो गया. हो गया. यश, Yes sir. Yeah. यश क्लियर हुआ? Yes sir. यश क्लियर हुआ ये? Clear है sir. हो गया. सर तो फिर जी, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 दोनों को कैसे? हाँ, 5 by 6 and 5 pi by 6 ये दोनों आंसर ओके सर. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये समझ में आया. सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड एनी एंगल इन एनी क्वाड्रेंट, वी विल यूज पाई एंड 2 पाई. तो इसमें स्टेप सेम रहेंगे. ऑलवेज फर्स्ट फाइंड द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड कर रहे हैं. नाउ सपोज अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? पाई प्लस कर देते हैं. युवराज क्लियर हुआ? युवराज, यश, हर्षित, यस सर. है ना? ओके. इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, युवराज कैसे करते हैं? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 by 4 pi plus नहीं, मैंने 2 pi minus 2 pi minus करते हैं. We have to use pi and 2 pi only, never pi by 2 and this 3 pi by 2. yes. ठीक है? So this is our answer. Please इसको नोट कीजिए. Then we will start next question. इसको रब कर दें. यस सर. Okay. Next question. Find the principal solution of the following equations. First is tan x is equal to root 3. Tell me the answer. Sir 30 degree. 60. Tell me in radian. ठीक है, हम डिग्री भूल जाएंगे. हम बात पाई बाय करेंगे 3 and 4 pi पाई by बाय 3. 5 by 3 and 4 पाई बाय 3. 4 pi by 3. युवराज ये? Yes sir. Okay. यश, हर्षित, बिस, मानस. Yes sir. ठीक है. Okay, हर्षित, यस सर. मानस. ठीक है मानस. Next is sec x is equal to 2. Please try this.
pi by 3 and 5 pi by 3. Pi by 3 and 5 pi by 3. 5 pi by 3. Okay, this is the answer. Harshit, Yuvraj, Yash, Manas, same answer. सर Yes, sir. 4 pi by 3 नहीं होगा इसमें? Check कर लेते हैं. This sec x is equal to 2. ठीक है? Either you will find in sec or cos. तो ठीक है? You can convert this into also cos. Yes, sir. That's your choice. 1 by 2 कब आता है? Cos x is equal to pi by 3. ठीक है? Yes. Now एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. Cos युवराज किस क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है? Cos fourth. ठीक है, तो फर्स्ट में तो हमें मिल गया. अगर हमें फोर्थ में चाहिए कैसे करेंगे? तो वो 7 by 3 pi नहीं होगा? क्या होगा? 7 by 3 pi. नहीं. हाँ देखिए, if we have to find the angle in this fourth quadrant हम कैसे कर सकते हैं? 2 pi उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे pi by 3. Yes, sir. है ना? कितना हो जाएगा? Oh, 5 by 3. 5 pi by 3. ठीक. Then try this question. Sin x is equal to minus 1 by 2. Try this. Seven pi by 6 and 11 pi by 6. 7 pi by 6 and 11 pi by 6. युवराज, यश हो गया कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Next question. I think this is fourth part. Cot x is equal to minus root 3. Two pi by 3, 5 pi by 3. Answer is 2 pi by 3, 5 pi by 3. 2 pi by 3 or 5 pi by 6. Oh, 6. This cot है ना? 5 pi by 6 and 11 pi by 6. Excuse me, sir. हाँ, ये युवराज. सर इसमें अगर -√3 है तो इसका मतलब हम वो क्वाड्रेंट देखेंगे जिसमें कॉट माइनस होता है. कॉट नेगेटिव होता है. इसका मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट छोड़ के सारे क्वाड्रेंट. नहीं, नॉट सारे. ये तो पॉजिटिव हो जाता है. This one and this one. ये दो सेकंड एंड फोर्थ. Second. Yes, sir. Try this question. और ना दरवाजा खोल लो तो वो हैंडल को सैनिटाइज करो और वो हैंडल को कितने बार सैनिटाइज करता है. हर्षित, प्लीज अपना माइक ऑफ करेंगे. Four pi by 3, 7 pi by 3. 4 pi by 3 and 7 pi by 3. 7 or 5.
5 Sir, pi by 3 and sorry sir, 5 pi. 5 pi by 3. 5 pi by 3. ठीक है, दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि हर्षित नहीं है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसका वो मिस हो गया तो आगे पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जनरल सॉल्यूशन करेंगे, दैट इज ठीक। एक उसके बाद ग्राफ और है जी। एक क्वेश्चन था सर। हाँ कसम बताइए। sin x divided by cos 3x। cos 3x हाँ जी सर। और प्लस प्लस sin 3x divided by cos, हाँ ऊपर ऊपर सर, ऊपर पूरा ये एक टर्म दूसरा टर्म सर। ओके प्लस sin 3x divided by cos 9x। cos 9x। हाँ जी सर। ओके फिर और प्लस प्लस sin 9x divided by cos 27x। sin 9x divided by cos 27x 27x is equal to is equal to 1 by 2 1 by 2 bracket on 10 bracket is 10 क्रिस्पल वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, और सब जा सकते हैं। ठीक है, क्लासेस ओवर, क्रिस्पल से मैं डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट्स द क्वेश्चन। ठीक, ओके क्लास, थैंक यू। ओके, पहले मैं होमवर्क आपको दे दूंगा। 27। हाँ क्रिस्पल, मैं पहले इन सबको होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। हेलो। हाँ क्रिस्पल, बस एक मिनट, मैं पहले होमवर्क देता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट एनसीईआरटी। Next exercise 3.4, question number 1 to 4, then miscellaneous complete plus assignments 1 to 8, 1 to 7. Okay, this is your homework, so please try to do the questions, उसके बाद next class में हम continue करते हैं। ठीक है युवराज, हर्षित, यश। मिसलेनियस तो चैप्टर के एंड में नहीं होती? हाँ मिसलेनियस चैप्टर के एंड में हमने कर लिए वो सारे टॉपिक्स जो भी मिसलेनियस में क्वेश्चंस हैं। इवन हमने कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मिसलेनियस में। सर वैसे कितने और टाइम लगेगा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने में? देखो मुझे बहुत लेंदी है, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी हम बात करें तो एक हमारा ये रह गया जनरल सॉल्यूशन, फिर ग्राफ आपको मुझे करवाने होंगे क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं, प्लस एक सप्लीमेंट्री पार्ट भी होता है एनसीईआरटी में, तो वो आप देखेंगे बैक साइड है बिल्कुल एनसीईआरटी के। ओके, सिर्फ 11 की हम बात करें तो आई नीड 2 मोर क्लासेस, फिर तो हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके यू वेलकम सर जी। हाँ कसवर, बस एक मिनट, पहले सबसे है ना बात करें फिर ये करें। हाँ। ठीक, ठीक है यश, सो क्लासेस ओवर, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग। ठीक है अर्शित, थैंक्स जी। कसवर, sin x by cos 3x plus sin 3x by cos 9x plus sin 9x by cos 27x, and this is equal to 1 by 2 10 27x। 10 27x हाँ जी सर, minus 10x minus 10x बस। ब्रैकेट ऑफ। हाँ जी सर। we have to ये prove प्रूव that। नहीं हुआ। हाँ ये प्रूव नहीं हुआ सर। ये नहीं हुआ। हाँ जी सर। मैं एक हिंट दूं आपको,
हाँ ट्राई जी करोगे आप? ठीक है, नहीं होता फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा. यस It is take LCM. ठीक है, ओके सर LCM लेके टू टर्म्स जाएंगे, फिर टू टर्म्स को ना ब्रेक करना है. जो प्रोडक्ट फॉर्म आ रहा है ना, हाँ जी सर break that product form into sum or difference form. ठीक है, ओके सर LCM लेना. प्लीज ट्राई दिस. ये हिंट वर्क करेगा. नहीं होता तो फिर मैं कर रहा हूँ. ठीक है सर ठीक है ठीक है सर एक और क्वेश्चन सर Marcus. Kasper, you are from which school? हाँ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल Which one? बॉयज हायर सेकेंडरी Okay, this is where? स्कूल नली Near Ladakh. यस सर लद्दाख लद्दाख ले Okay. What's the next question? if sin alpha plus sin beta is equal to a Okay. and cos alpha plus cos beta is equal to no sir sin alpha plus sin beta Sin alpha plus sin beta. हाँ जी सर is equal to a cos alpha plus cos beta is equal to b. Okay. Show that So that sin alpha plus beta sin alpha plus beta. This one, na? हाँ जी सर Ji. is equal to 2ab 2ab divided by a square plus b square divided by a square plus b square. b square. मैंने राइट हैंड साइड में a और b का वैल्यू रख के ट्राई किया पर ठीक से नहीं आया सर. अच्छा. Let this be first, this be second. ठीक है. First of all, multiply this sin alpha plus sin beta into cos alpha plus cos beta. Okay. So open this. ये कितना हो जाएगा? Sin alpha cos alpha plus this is sin alpha cos beta plus sin beta cos alpha plus sin beta cos beta. Okay. Yes. Then apply these two formulas. ठीक है. यहाँ से आ जाएगा sin alpha plus beta. ठीक. इसमें मैं हिंट देता हूँ आपको. इतना करने के बाद then find a square plus b square. डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू पुट मत करो, वो प्रूफ नहीं होगा. Then find a square plus b square. ओ ठीक है सर. ये इधर से आगे, ये इधर से आगे. डायरेक्टली नहीं आया था सी. हाँ, डायरेक्टली नहीं होगा. ठीक है. ओके सर Please try to do this. नहीं होता मैं करवा दूंगा. अब हो जाएगा. होगा सर. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू सर. Okay, you're most welcome.